welcome back to Dynamic Natural English. Today I am here with a new video to teach you how to improve your spoken English skill. आप जानते हैं इंग्लिश बोलना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर टिपिकल है। वो टिपिकल इस तरह से कि आपको कुछ ख़ास पैटर्न फॉलो करना है जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। आमतौर से हमारे यहाँ पे इंग्लिश बोलने के लिए ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो किया जाता है। ट्रांसलेशन से पहले एक बार हिंदी में सोचेंगे या उर्दू में सोचेंगे, उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, देर लगती है और सोचने और ट्रांसलेट करने और फिर बोलने में इतना टाइम लगता है कि स्पीकर फिर फ्लुएंट नहीं हो पाता है, स्पीड में नहीं बोल पाता है। जबकि इंग्लिश रिदमिक लैंग्वेज है, उसमें स्पीड होती है, रिदम होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें और फिर बोलें। तो जब इंग्लिश में सोचेंगे तो इंग्लिश में बोलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये प्रोसेस होगा कैसे? इसको करने के लिए आप वर्ड्स को यूज़ करेंगे बार बार और उसकी मीनिंग, जैसे डंकी है तो उसके मीन में गधा। अब गधे को आप सोचेंगे फिर डंकी में कन्वर्ट करेंगे तब फिर बोलेंगे। दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यू हैव टू थिंक डंकी, नॉट टू थिंक अबाउट गधा। तो इस तरह से आप वो जो टर्म्स हैं उनको यूज़ करना प्रैक्टिस के थ्रू सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम वही आपको सिखाने के लिए आए हैं कि किस तरह से आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। हम एक स्टोरी लेंगे, स्टोरी को आपको सुनाएंगे, फिर स्टोरी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आप समझेंगे। समझने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। उन क्वेश्चंस को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आई विल टेल यू हाउ टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से शुरू से आखिर तक देखें और बिना स्किप किए हुए जब पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको आंसर देना आना शुरू हो जाएगा। आंसर देना ये भी एक आर्ट है। आर्ट कैसे है? कुछ वर्ड्स को इधर से उधर करना है। सारे टेंसेस को पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि किस तरह से सवाल पूछने का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, उसका जवाब देने का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। यानी कि दो तरह की बातें होती हैं, एक बताना और एक पूछना होता है। तो पूछना अगर है तो किस तरह से सवाल पूछेंगे और बताना है तो किस तरह स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें वर्ड्स कौन कहाँ पे रहेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन आंसर देते हुए हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू improve your communication skill in this video. Listen it carefully and follow me while I'm going to tell you a story. First, listen the story carefully and later I'll ask you 5 questions related to the story and you will be motivated to answer those questions that will be asked in the end of the story. So listen it carefully. I'm saying it again. So here is the story. Seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved into the water and hence the bag became very light to carry. The donkey was very happy. Then the donkey started to play the same trick every day. The salt seller came to understand the trick and decided to teach a lesson to it. The next day, he loaded a cotton bag on the donkey. Again, it played the same trick, hoping that the cotton bag would be still become lighter, but the dampened cotton became very happy to carry and the donkey suffered. It learnt a lesson. It didn't play the trick anymore. After that day, the salt seller was happy. Here is the end of the story. What is the moral of the story? What did you learn from the story? We will discuss it later, but
First of all, I'd like to explain in English what was the story. There are two characters in it. One is the salt seller and the other is the donkey. The action of the salt seller is to carry the load of salt bags on his donkey, and the donkey had to carry it crossing a stream. While crossing the stream, one day happened that the donkey suddenly tumbled down. Being on the way while crossing the river, when he tumbled down, he fell down in it. As he fell down into the river, the salt bag started dissolving. When salt dissolved, the load becomes lighter. When the load becomes lighter, the donkey becomes happy. When the donkey becomes happy, he thought to play the same trick again and again while crossing the river. He started playing the trick again and again. While he reached the river, being in the stream, he tumbled down and dissolved some salt from it. When salt is dissolved, his load became lighter than before. So it happened that the salt seller was very upset. He started to think a plan how to get rid of this trick of the donkey that was playing with him again and again. So he loaded a bag of cotton on his back the next day. Without understanding it, the donkey played the same trick. When he tumbled down into the river, the cotton bag becomes heavier with dampened water, with dampened cotton. When the cotton became heavier, the donkey suffered a lot because the load became so heavy to carry. It was too heavy that he was not able to carry it. In this way, he learnt a lesson. आपको समझ में आ गई होगी कहानी. अब हिंदी में इस कहानी को समझा देते हैं कि एक नमक का व्यापारी होता है. वो अपने गधे पे सॉल्ट बैग यानी कि नमक की बोरी लाद करके रोज़ाना जाता है. तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, एक जलधारा पड़ती है, उसमें से गुज़र के जाना पड़ता है. एक दिन ऐसा होता है कि वो गधा ठोकर खाता है, पानी के अंदर वो गिरता है तो नमक उसमें पिघलता है. कुछ नमक पिघलने की वजह से उसका लोड हल्का हो जाता है. जब लोड हल्का हो गया तो गधा बड़ा खुश कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लोड हल्का हो गया और हल्के हल्के लेके चलने लगा. तो रोज़ाना एक ही ट्रिक वो करने लगा, एक ही तरह की चाल चलने लगा कि जब उस पानी में आता तो वो लुढ़क करके नमक को हल्का कर देता, गला करके, और फिर लोड कम होने से वो आसानी से मार्केट तक चला जाता था. तो वो परेशान व्यापारी की क्या करें इसके साथ में. तो उसने एक दिन रुई का बोझ लाद दिया उसके ऊपर. रुई का जो बैग लादा तो वही चाल फिर गधे ने चली. जब गधा पानी में पहुंचा तो फिर लुढ़कता है और वो रुई गलने की बजाय वो भीग करके भारी हो जाती है और लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. जब लोड बहुत भारी हो गया तो गधा मुसीबत में फंस गया. मार्केट तक पहुंचते पहुंचते उसकी जान निकल रही थी, यानी कि बहुत परेशान हो गया था, बहुत झेला उसने. फिर ऐसी चाल चलना उसने बंद कर दिया. This was all about the story I have explained you in Hindi as well. Now here's the time to give you some questions to answer. I'd like to tell you how to answer the questions.
and how to make questions from some text. So I have 5 questions for you. They have taken from the story. Question number 1 for you. Who used to carry the salt bag on donkey? Who used to carry the salt bag? Question number 1. Who used to carry salt bag on the donkey? So what will be the answer? Try to understand it. How to answer a question? First find what is the question. First find out the question. Here is the question word who. It means you have to tell the name of a person, not a thing. किसी चीज का नहीं, person का नाम बताना है. Who used to carry the salt bag on the donkey? गधे पे कौन बोझ ढोया करता था? What will be your answer? You can find out the answer from the text that I have read for you now. For the answer of this word, you have to write down the salt cellar. The salt cellar will be the answer. The salt cellar used to carry, now write down the same thing as here, used to carry salt bag on the donkey. Now the answer is complete. It's very easy to answer a question. When somebody asks who, it means you have to tell the name of a person, someone who did the action given here. क्वेश्चन में जो एक्शन दिया हुआ है उसको करने वाला कौन है, ये चीज आपको जानना है. इसको जानने के लिए आपको टेक्स्ट या किसी चीज को रेफर करना पड़ेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. what had he to cross on the way? Next question. What had he to cross on the way? Second question. What had he to cross on the way? In this question, you have to tell the name of something. किसी चीज का नाम बताना. What means क्या या क्या चीज. What had he to cross? उसे क्या पार करना पड़ता था? On the way, रास्ते में. Then your answer will be, सबसे पहले सब्जेक्ट. यहाँ who का आंसर ये सब्जेक्ट ही बनाता है. who किसी पर्सन का नाम है, करने वाले एक्टर का नाम है, तो वो पहले रखा जाता है. लेकिन यहाँ पे एक्टर लिखा हुआ है ऑलरेडी. आपका जो आंसर है वो what के आंसर में आएगा जो कि ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को लेंगे. ही, अब ये वर्ब आएगा. ही हैड टू क्रॉस. कैसे आंसर बनाना है ये आप ध्यान देंगे. ही हैड टू क्रॉस यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ गया. ये मेन वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है. हैड टू क्रॉस, क्या क्रॉस करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा. क्या क्रॉस करना पड़ता था? क्रॉस अ स्ट्रीम. He had to cross a stream on the way. On the way. This becomes answer. ये इस तरह से इसका जवाब बन गया. और अब देखेंगे इसका आंसर stream बन रहा है. Now come to the next question. Question third. How did the donkey know a trick to lessen his load? How did the donkey know a trick to lessen, less कम करना, to lessen his load? कौन सा ट्रिक लगाता था? कैसे जान पाया? हाउ डिड द डंकी नो, डंकी यानी गधा कैसे जान पाया एक चाल अपने बोझ को कम करने के लिए? तो कैसे वो जान पाया? ये एक एक्शन के थ्रू, ये प्रोसेस बताना. हाउ के आंसर में आपको प्रोसेस बताना है. तो अब सब्जेक्ट ये है. डिड नो विल बिकम न्यू. द आंसर इज हियर. The donkey
the donkey did know will become knew. The donkey knew a trick to lessen his load when he tumbled down the stream. Here is the process. This is the process. How के आंसर में ये इसका हाउ क्वेश्चन के आंसर में ये इसका आंसर होगा. डंकी को कैसे पता चला? वो जान पाया एक ट्रिक के बारे में लोड को कम करने की, जब वो ठोकर खाया उस स्ट्रीम में, जलधारा में. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. What did the salt seller do to get rid of this problem? Salt seller ने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? The answer is, what did the salt seller do? The salt seller, the answer is here. The salt seller, here is the subject, यहाँ पे subject है. The salt seller did do, ये did do है, क्या किया? तो जो किया उसको हम बताएंगे. The salt seller loaded a cotton bag in place of salt bag to get rid of the problem. He loaded cotton bag in place of salt bag. This was the action. किया क्या? कॉटन बैग को लाद दिया सॉल्ट बैग की बजाय, सॉल्ट बैग की जगह पर. तो इस तरह से छुटकारा पाने के लिए ये एक्शन उसने किया. ये इसका आंसर बन जाएगा. व्हाट डिड ही डू? ही डिड दैट. ये आंसर मैंने आपको बता दिया. Do you learn from the story? This is the last question for you, and you are to answer the question yourself, because I'm not going to tell you the answer of the last question. It will be your question to answer, because you have learned something from the story. Here you have to tell the moral of the story. What is the moral of the story? What do you learn from the story? It is your turn to answer. It may be a longer answer. जैसे आपको लगता है उस तरह से आप आंसर, बड़ा आंसर दे सकते हैं जो आपने सीखा इस कहानी से. बट मेरा आंसर ये होगा कि luck won't always help. हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है. Sometimes you have to use your intelligence, your brain, your logic, your reason. If you don't use your logic, your reason, your brain, your intelligence, you are befooled. You suffer. That's why I ask you to use your brain and try to make yourself better. इस तरह से आप इस कहानी के थ्रू एक इंग्लिश बोलने का जो पैटर्न है, कैसे किसी के सवाल का जवाब देंगे, कैसी अपनी बात को रखेंगे, मैंने आपको बता दिया है. अब इसको आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे और अपने आंसर खुद से बना करके, इस तरह की कहानी से अपने आंसर बना करके अपने स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करें. ये सिर्फ रिटन में ही नहीं है, बल्कि आपको स्पोकन में भी इसको फॉलो करना है. आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, यानी कोई आप कहीं खड़े होकर के आप बात कर सकते हैं, जैसे कि वेदर के मारे. हाउ इज द वेदर टुडे? मौसम आज कैसा है? इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर, इट्स वेरी फाइन वेदर, आई लाइक इट. इट इज अ रेनी सीजन and the air is very cool, and variety of things, that the floor is cemented, the floor, whatsoever you look there, you can explain in your own words. अपने sentences बनाइए, अपने words में explain करिए जो कुछ आपको समझ में आता है. सिंपल सेंटेंस बनाइए, और इसको जानने के लिए सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे मैंने सारे टेंसेस आपको पढ़ा दिए. उसमें जा करके
टेंसेस को एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उन टेंसेस में कैसे सेंटेंसेस बनाने मैंने स्ट्रक्चर सारे बताए हैं, उसके ज़रिए से आप अपने छोटे छोटे सेंटेंस बना करके उस पर बोलते रहिए और बोलते बोलते फिर प्रैक्टिस हो जाएगी. नाउ आफ्टर दैट you will be able to speak better English. You will not remain a beginner anymore after learning through the lessons on dynamic natural English. This is the channel that will help you to be a good speaker, a fluent speaker of English language. So thank you for watching the video and hope you have enjoyed it. Don't forget to share the video and subscribe the channel, and see you in the next video.